Hello everyone, my name is Yash Patel and today we will going to solve these questions which are basics of coding in R and Python. Now we will going to do with the Python language and with taking the suitable example. Here the suitable example means that I will going to take this data set as example, and this data set I have opened in the Excel. Yeah, so we will take this data set and we will perform, you can see the data set, and we will perform all the questions, we will perform all the coding questions under this, taking this data set. Okay, so here we have the questions. So first is using comments in Python. Now, how we use comments in Python? This is how we use comments in Python. Okay, by using hashtag, we can use comments in Python. And if we want to comment out the multiple lines, then what we have to do is we have to wait a second. We have to create we have to add this brackets. So we don't want to comment out this. These are also the technique, and we can also handle it with a single brackets. Single commas, not brackets, sorry, commas. So we use quotation marks. These are the quotation marks, and we use apostrophes to comment out the multiple lines in the Python, and this hashtag used for commenting out the single line only. Now coming to the next question, that is executing commands in Python. Now executing commands in Python, what does it mean? It means that different type of functions and methods that we use within the Python language. Okay, so we will use different methods over this whole project, over this in this whole project. So we will use different types of methods, so that is called the method. So basically method means functions or methods. Okay, now the third one is importing packages in Python. Now importing packages means packages. What are the packages in Python? First of all, basically it is a form of collection of tools within the Python language, and we have here different type of packages like pandas and matplotlib, seaborn, numpy. So these are different types of the packages within the Python language. These are some tools which we can use. By this we will use this packages. Okay, we will use this packages. Why we will use this package? Because it will easy us to import and to do programming and to actually do whatever we want to do with the data set. It will allow us to do many things, to like we can draw a chart from it, and we will see the questions coming next to this. Next, after these questions, we will see how this are useful here. Okay, so this is about the package. So here we can see that import pandas spd. Okay, now here we have imported the pandas package. Okay, so
importing the pandas package. Now what we have to do is, this is collapse, so here directly have imported the pandas and it will work. But in VS Code and in any IDE we have to download it first. So how we can download it? Let me open my VS Code. So this is here I have implemented all the code and then copied it to the collab, because obviously I want to code it first into the VS Code. So here what we have, I have imported packages, executing commands. So executing commands, I have taken an example here. Result is equals to 27 plus 35. So print result. This is what we have called what we have made the called the result. So these are some commands and I have already discussed about it, okay, previously. And here what is getting data into R. Now here is I'm talking about the import packages, okay. So import packages अगर हम लोग देखें तो import pandas as pd मैंने यहाँ पे किया हुआ है, but what we have to do is first we have to install it. If you have not installed it, pip install. So let pip install pandas and we will click it. So I will get the, okay, I'm getting the error, a new release pip install available. So it is showing me the pip install available and all, and I have to basically change it to the Python. So here I have already shown that how we have to install the pandas in Python. Now we are moving further and I will show you the next question. The next question we have is, so we know how to use the commands in Python, executing commands, importing packages, and now we are getting data into R. Not R here. Take R, not here we are not coding in R, so just ignore R. We are taking in Python. So data को हम लोग Python में कैसे लाएंगे? So we will कैसे हम लोग data को Python में लाए? So हम लोग जो Python में लाने का तरीका जो VS Code में है, that is different. VS Code में हम लोग डेटा को कैसे रीड करवाएंगे? हमने कोई भी वेरिएबल लिया, वी हैव टेकन एनी वेरिएबल, वी हैव टू स्टोर दिस, ओके. So any variable, I have variable name data is equals to pd.read csv. This is important, okay. And here the panda library we are using, okay. तो pd.read underscore csv. ना ये क्या करेगा मेरी, और यहाँ पे हमको लोकेशन देनी है जहाँ पर पे भी मेरा ये जो डाटा है वो स्टोर्ड है. तो मैंने उसको लोकेशन दे दिया, ठीक है. और यहाँ पे हमें कॉमा एंड सेमी कॉलन्स और इसका कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पाइथन इज़ वेरी ईजी लैंग्वेज, very free language. We can say that we don't have to use and we don't have to take care about this कि एंड में आपको सेमीकोलन लगाना है, कॉमा लगाना है, ब्रैकेट्स. नो, वी डोंट हैव टू डू दैट, ओके. सो हमने कैसे रीड करवाया डेटा को? pd.read csv. नाउ जब मैंने इसे कोलैब में किया, सो व्हाट आई हैव डिड इज, मैंने क्या किया यहाँ पे कोलैब में कि पाथ मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है. पाथ मैंने एक वेरिएबल एंड मुझे जो है ये जो डेटा है मुझे इसको स्टोर करवाना पड़ा था गूगल ड्राइव में, ओके. मेरी इसी आईडी की मुझे गूगल ड्राइव में इसको स्टोर कराना पड़ा, सो दैट ये रिट्रीव कर सके गूगल कोलैब अपने इसमें. एंड यहाँ पे मुझे उस गूगल कोलैब का एड्रेस यहाँ पे देना पड़ा .csv करके, क्योंकि वो CSV फाइल है, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ मैंने डेटा को इसके अंदर चूज़ किया. सो मैंने क्या किया, इस कोलैब में मैंने डेटा को पहले गूगल ड्राइव में एंटर करवाया एंड देन मैंने यहाँ पे उसको पाथ उसका असाइन कर दिया इन द पाथ वेरिएबल. आप यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है. एंड देन डेटा इज इक्वल्स टू मैंने किया pd.read csv पाथ, ठीक है. मतलब कि हम जहाँ भी ये वेरिएबल यूज़ करेंगे, इट विल रीड दिस पाथ, ओके. इट विल रीड दिस, हमारा जो भी जितना भी पूरा हमारा जो
डेटा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल फाइल, वो जो है यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है, इसे यूज़ करके, डेटा को यूज़ करके। नाउ यहाँ पे प्रिंट डेटा करा दूंगा मैं, अगर प्रिंट डेटा करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा ये जो है जितना भी मेरा डेटा है, मतलब जितनी भी बड़ी ये एक्सेल शीट है, ये सारी की सारी जो है डॉट डॉट के फॉर्म में, नॉट पूरी प्रिंट नहीं होती है बट या डॉट डॉट के फॉर्म में प्रिंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम सारी की सारी तो प्रिंट नहीं करवाएंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे देखिए कुछ आउटपुट्स आ रखे हैं। सो या तो इधर यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेविंग आउटपुट। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेटिंग डेटा, नो, सेविंग आउटपुट इन पाइथन। So this is how we will going to save the output data dot to csv output dot csv, okay, and index is equals to false, we will do it, index is equals to false, okay, and this is the output we will get. Now access and print specific variable columns। तो specific variable column को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग एक्सेस करेंगे कुछ इस तरीके से कि प्रिंट डेटा ब्रैकेट्स ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ऑर्डर नंबर वगैरह का लेंथ और डेटा बाइट्स और जो भी उसकी मतलब जो कॉलम है वो हमको मिल जाएगा, स्पेसिफिक कॉलम वेरिएबल हमको इस कोड से वी विल गेट दी कॉलम और वेरिएबल। So this is all about the basic of coding in Python. We will see next codes, which means this codes in next video. So yeah, this video is over. Thank you very much for watching.